Hey guys, hello. A very good evening to all of you over here. How are you doing, folks? I hope you are doing great, right? First of all, I'm meeting you for the very first time in the very new year. So a very happy, prosperous and a successful new year to all my dear students, right? Come on यार, chats में कम से कम न्यू ईयर तो विश सबको बनता है, right? All of your friends and to me. Come on, right? So this is Deveeka, right? I am Dr. Deveeka. I'm your biology buddy, right? I am your biology mentor, right? So we are here to tackle all the tricky questions that are going to come in this particular examination of 2023 and we are going to rock it. Alright, with that say, आज हम क्या पढ़ने वाले? What are we going to study? So सबसे पहले मेरे सारे बच्चे जो कि सबसे पहले सेशन को ज्वाइन करते हैं उनका नाम लेना बनता है कि नहीं? Right? Akshit and Likith, right? Geeta. A very happy new year. Very good. You guys are bang on time and I love punctuality. If I like something, it's the punctuality, right? One thing that I love. I am fantastic. Thank you for asking, Likit, and I hope you are doing the same. तो भैया आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? What are we going to study today? Right? So, science के textbook में का सबसे lengthy chapter, the life processes. ठीक है? सबसे लेंदी चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस एंड दिस लाइफ प्रोसेसेस ओके इसमें कई सारे लाइफ प्रोसेसेस की बात की जाती है. इन दिस पर्टिकुलर सेशन हम उस सारे क्वेश्चंस को टैकल करेंगे जो कि न्यूट्रिशन से आ सकते हैं. अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. यू विल फाइंड द क्वेश्चंस फ्रॉम सेक्शन ए टू सेक्शन ई. सारे ही सेक्शंस में पता है ना बोर्ड एग्जाम में कितने सेक्शंस आते हैं, राइट? हीरो, हाय बच्चा, राइट? सो यू नो हाउ मेनी sections come in your examination. Section A, B, C, D, E, right? ये 5 sections आते हैं. पांचों section में you can find the questions from life processes. So without further ado, I am going to start with the mind map for you. Ready for the mind map? You can take a screenshot or else you are going to get the PDF in the Telegram group. So join over there. So सबसे पहले आ गया हमारा mind map. ठीक है, तो लाइफ प्रोसेस चैप्टर में हम किन किन चीजों के बारे में बात करते हैं. व्हाट डू वी टॉक अबाउट इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर? सो वी टॉक अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस. द लाइफ प्रोसेसेस, द न्यूट्रिशन, वी टॉक अबाउट एक्सक्रीशन, वी टॉक अबाउट ट्रांसपोर्टेशन एंड रेस्पिरेशन, गाइस, राइट? न्यूट्रिशन, व्हाट डू वी टॉक? वी टॉक अबाउट न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. तो भाई पेड़ पौधों में हाउ डू दे हैव द नरिशमेंट, उनमें न्यूट्रिशन कैसे जाता है? सबसे पहले हु कैन टेल मी व्हाट इज नरिशमेंट? प्लीज गिव मी द आंसर इन चैट बॉक्स राइट नाउ. लेट मी सी हु कैन आंसर दैट. आई एम लुकिंग एट योर चैट्स राइट ओवर हियर. ठीक है, तो सबसे पहले बताओ कि व्हाट इज न्यूट्रिशन? व्हाट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन को पढ़ने वाले हैं, लेकिन सबसे पहली बात, न्यूट्रिशन है क्या चीज, राइट? व्हाट इज द न्यूट्रिशन? हु कैन आंसर मी दैट क्वेश्चन? प्लीज आंसर ओवर हियर, राइट? सो बाय द टाइम यू आंसर, टाइप योर आंसर्स इनटू द चैट बॉक्स. आई एम गोइंग अहेड. ठीक है, सो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स वी हैव ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन व्हिच हैपेंस बाय फोटोसिंथेसिस. मोड ऑफ फीडिंग you are saying blue love. Then Geeta is saying taking nutrients, okay? Jay is saying nutrition for energy and maintenance and repair of the body. Fantastic, Jay, right? So fantastic, guys, fantastic. So what is nutrition का answer मैं अभी दूंगी. Wait, बने रहो मेरे साथ, ठीक है? So nutrition in animals. Plants में तो photosynthesis. Animals में we are having heterotropic nutrition. But do all animals show heterotropic nutrition? Answer me that. Right? And
we have another organisms also जो कि हमें आंखों से दिखते नहीं है, which are teeny tiny microscopic. The process of providing or obtaining the food necessary for health and growth. Fantastic, Sky. Very nice, right? So that is nutrition. That is nutrition. Merely intake of food would be ingestion. है कि नहीं? Merely intake of food would be ingestion. लेकिन when we say nutrition, so nutrition is something which provides you energy, right? Which helps you to provide all the vital material for you, the maintenance of your body, right? तो चलो आज का टारगेट सेट है भैया, ठीक है? आज का टारगेट क्या है हमारा? Who can tell? What's the target? The autotrophic nutrition, heterotrophic nutrition, nutrition in unicellular organism. Questions यहाँ से आते हैं, though it is very simple, right? And nutrition in humans. So when we talk about nutrition in all the other animals, सबसे पहली बात खुद को जानो, right? तो खुद को हम कैसे जानेंगे? We will understand it by understanding the nutrition that you do. आज क्या खाया आपने? फटाफट चैट बॉक्स में बताओ, ठीक है? आज हम पढ़ेंगे कि आपने क्या खाया और उसको कैसे डाइजेस्ट आपके बॉडी ने किया, ठीक है? Did you had pizza? I don't like pizzas, right? Basically, no. I love greens, ठीक है? I'm a pure vegetarian. I'm a लास्ट चैप्टर में पढ़ेंगे बच्चा इसके बारे में, है ना? मैं कैसी हूँ? ओमनीवरस हूँ कि हर्बीवरस हूँ? So we do nutrition for the metabolism, ठीक है? अब न्यूट्रिशन में जब हमने बात की, न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन की बातें हमने की, बट वी डिड नॉट मेंशन अबाउट रिप्रोडक्शन. Why? Who can tell me? See, in this examination, be prepared. This is the sort of questions that are going to come. There is no direct question, ठीक है? सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे, वहां तक सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, राइट? कि डायरेक्ट सब्जेक्ट क्वेश्चंस आया है, लेकिन ऑल दी अदर सेक्शंस विल हैव सच काइंड ऑफ ट्रिकी क्वेश्चंस. सो अभी ये ट्रिकी क्वेश्चन, एंड इफ यू स्टे इन दिस सेशन you will definitely know कि what sorts of question will come, and I guarantee you 80% of questions will come from the sessions that we are conducting. That's my promise to you. Now here, किसी ने दाल रोटी खाया है, राइस दाल एंड करी खाया है, ठीक है? दाल रोटी सबसे ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, ठीक है? सो ठीक है, चलो अब मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, व्हाई रिप्रोडक्शन इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन द लाइफ प्रोसेस वाला चैप्टर. यहाँ पे वाइटल लाइफ प्रोसेसेस की बात हो रही है. व्हाई आर वी नॉट टॉकिंग अबाउट रिप्रोडक्शन? बिकॉज रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो अ साइन ऑफ लिविंग बीइंग, जैसे कि बाकी चीजें हैं, है ना? तो व्हाई इज दैट सो? It is not related to life process at all. The Sharth is saying it is not related to the life processes at all. Is that correct? What do you guys think? It's secondary. Okay. Keep answering that until and unless I get the correct answer. We will see it in the chat box. Reproduction is not available. Hey, it's available. It is available, very much available. है कि नहीं? It is very much available. Now you tell me that कि why reproduction is not included in a vital life process. Okay, I'll give you the answer shortly. And today in this session, in the end, I have a surprise for you. If you want a surprise, wait. I'll give you the surprise in the end of the session. So now we have two modes of nutrition, autotrophic and heterotrophic. Auto is because it's deal with the products of our species, okay? Hi Silent Yodha, nice to see you here. Hey, correct Sky, right? So Sky has given the correct answer. Ki reproduction is not
required for sustainability of an individual. अगर मेरे बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो रहा है तो आई विल डाई, है कि नहीं? बट इट इज नॉट, इफ रिप्रोडक्शन नहीं करना है, इफ समबडी डिसाइड्स कि मुझे बच्चे नहीं चाहिए, आराम से जिंदगी कट जाएगी उसकी. कटेगी कि नहीं? बेहतरीन ही कटेगी. इनफैक्ट, राइट? I see you. Welcome to the class. तो चलो, heterotropic mode and autotropic. Name tells you all. CR, my students know, right? Silent Yodha, you're my student, right? So tell me in the chat box, Silent Yodha, your name, real name, and also tell me what do I talk about biology. मैं क्या कहती हूँ कि biology is a fill in the blank. Come on, my students will answer that correctly. I always give that dialogue. Tell me, biology is fill in the blank. I always say that. ठीक है? Mahinder, okay. Hi Aman, nice. So यहाँ पे है heterotroph, मतलब कि CR. I'll tell you, biology is a language. Once you understand this language, what did I promise you in the introductory session? I promised on my slide कि I will kill the rot learning. Hi Somesh, this is your first class, so is it mine. We are in sync, right? Biology is a language. You just understand the meaning of it and you will not require to mugify stuff. जैसे कि यहाँ पे hetero मतलब कि other. ठीक है? एंड ट्रॉपिक इज न्यूट्रिशन. ऑटो मतलब कि सेल्फ एंड ट्रॉपिक इज न्यूट्रिशन अगेन. राइट? करेक्ट? यस. Fantastic. So why do we require this life processes? We require it for the maintenance of our body, as you guys stated it correctly, right? So it is also required for your activities because ultimately food is for energy, right? If I ask you why do you eat food, you say ma'am nutrition, ma'am energy के लिए. तो मैंने अपने YouTube short में आपसे एक क्वेश्चन पूछा था. क्या था वो क्वेश्चन? किसी ने देखा है आज का YouTube शॉर्ट? हाँ जी, एग्जैक्टली सोमेश, करेक्ट. आज का YouTube शॉर्ट किस किस ने देखा है बताओ जरा. एक क्वेश्चन मैंने पूछा था आप लोगों से कि व्हाट इज फूड फॉर. यू विल से एनर्जी सिनोनिमसली. सारे के सारे जो बच्चे हैं, गाइज आई डोंट सी लाइक्स. Why don't I get likes? थोड़ा सा like, right? Give me energy. मैं फूड नहीं खाती हूँ, मैं तुम्हारे likes खाती हूँ, ठीक है? That is my energy. अच्छा, तो महेंद्र है आप, ठीक है? जयंत, यही मैंने पूछा था कि what is nutrition. सबसे पहले यही क्वेश्चन हमने सॉल्व किया बेटा आज, ठीक है? So हाँ जी, फूड है एनर्जी के लिए. तो मैंने आपसे आज के वाईटी शॉर्ट में यूट्यूब शॉर्ट में क्लास के पहले क्वेश्चन पूछा था. क्वेश्चन क्या था? गिव मी द आंसर. ओके, अगर आपने वहां पे आंसर नहीं दिया है यूट्यूब शॉर्ट में, कोई बात नहीं, इन द लाइव चैट राइट नाउ गिव मी द आंसर. द क्वेश्चन वाज व्हेन यू से कि फूड इज फॉर एनर्जी, तो लंच खाने के बाद इतनी नींद क्यों आती है भैया? मुझे तो बहुत नींद आती है कभी कभार, तो मैं लंच स्किप ही कर देती हूँ अपना, है ना, हल्का फुल्का खा लेती हूँ ताकि मैं आपके क्लासेस में आ पाऊँ. नहीं तो मैं यहाँ पहुँच ही नहीं पाऊंगी. आई बी स्लीपिंग मे बी, राइट? सो या टेल मी. यस अमन, यस करेक्ट, राइट? तो चलो, ड्यू टू द मेटाबॉलिज्म, close enough. Are you guys ready for the question? My kitty, where is my kitty? Kitty आ गई, मेरी kitty आ गई. Question kitty, right? That is my cutie question. ठीक है, so वो लेके आई है आपके लिए एक सवाल, and the सवाल is all plants give out oxygen during the day and carbon dioxide during the night. Do you think it is true? It is true, or do you not think it is not true?
Do you agree or do you disagree with this statement? And if you do agree, why? If you do disagree, why? ठीक है? ठीक है? Hey, I want more likes. I want more likes. You agree? Okay. Abdullah says he agree. Okay, fine. So you say कि सारे के सारे plants जो है वो ऑक्सीजन डे टाइम में देते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो नाइट में छोड़ते हैं, राइट? या इट्स ट्रू, अग्रीड, बिकॉज ऑफ सनलाइट. अरे वाह वाह. तो मैं एक बात बता दूं आप लोगों को, ये सवाल क्वेश्चन इज अ पीवाईक्यू. ये एक पीवाईक्यू है. पीवाईक्यू मतलब कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एंड इसका सही जवाब आई डू नॉट अग्री विथ इट. तीसरी चैप्टर हम आज नहीं पढ़ेंगे बच्चा अमन, ठीक है? आई हैव रेड योर चैट बेबी. वी विल लर्न इट इन 9th क्लास का चैप्टर्स, ठीक है? Okay, Rohit, close enough. Because they do photosynthesis during the daytime. Both says and Blue Love says cause during photosynthesis plants give out oxygen. Okay. And carbon dioxide during the night. Second part भी है क्वेश्चन का, ठीक है? यहाँ पे हमारे गिर जाएंगे मार्क्स, जो नहीं होना चाहिए, जो नहीं होना चाहिए, ठीक है? ये नहीं होना चाहिए. चलो, सो नाउ हम बढ़ते हैं इसी सवाल को समझते हुए आगे. इसका जवाब आपको इसी के साथ मिलेगा जैसे जैसे आप ये समझते चले जाओगे, ठीक है? सो व्हाट हैपेंस? कंपोनेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस इज ये अब्दुल्ला, मोहम्मद अब्दुल्ला, यप. तो अभी photosynthesis requires what? It requires very basic things, inorganic compounds. क्या चाहिए उसे? Inorganic compounds चाहिए, जैसे कि sunlight, carbon dioxide, water and chlorophyll. ये सारी चीजें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड क्लोरोफिल, अगर ये रॉ मटेरियल, इन्हें हम क्या कहते हैं? वी कॉल देम दी रॉ मटेरियल. ठीक है? रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस. सो फोटोसिंथेसिस जिस भी ऑर्गेनिज्म में होता है, दे कैन कन्वर्ट इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस टू द ऑर्गेनिक सब्सटेंस. ठीक है? दे कैन एक्चुअली कन्वर्ट इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इनटू ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. Okay, so Aman, I'll answer that, okay, later in the end. तो अब यहाँ पे how is this photosynthesis happening? What is the process of photosynthesis? Yes, correct. तो अभी हम किचन में ही जा रहे हैं, right? We are going into the plant का किचन. प्लांट का किचन जैसे अमन ने बताया क्या है? हाँ अब्दुल्ला, उसके बारे में भी बात करेंगे. I'll come to that point. I love that curiosity of yours. ठीक है? तो किचन है हमारा क्लोरोप्लास्ट, राइट? प्लांट का किचन है क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट में जब फोटोसिंथेसिस होता है, देयर आर साइट्स. एग्जाम में पूछा जाता है साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, साइट ऑफ लाइट रिएक्शन, साइट ऑफ डार्क रिएक्शन. वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट कि कौन सी साइट किस चीज के लिए है. आई डू नॉट सी लाइक्स. आई एटलीस्ट वांट 100 लाइक्स ऑन दिस राइट नाउ. ठीक है? आई एम रियली हंग्री. गिव मी माई फूड. ओके, सो नाउ यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है. ये प्लांट का किचन है. किचन में है ग्रैनस, थाइलाकॉइड्स, स्ट्रोमा. ठीक है? ये तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. अब देखो ट्रिक आने वाली है टू रिमेंबर. अक्सर मैं देखती हूं कि बच्चे लड़खड़ा जाते हैं व्हेन इट कम्स इनटू द एग्जामिनेशन. इट्स नॉट दैट यू डोंट नो, you already know it, but at times in the pressure, नया माहौल होता है, नया प्रेशर होता है बोर्ड एग्जाम का, उसमें हम गड़बड़ा जाते हैं.
तो थाइलाकॉइड और ग्रैनम में हमेशा कंफ्यूजन हो जाता है कि विच वन इज द थाइलाकॉइड एंड विच वन इज द ग्रैनम, वेदर द ग्रैनम फॉर्म्स द थाइलाकॉइड और द थाइलाकॉइड फॉर्म्स द ग्रैनम. तो वेरी सिंपल बच्चा ओवर हियर. The trick of the day for you guys, note it down with pencil on your NCERT textbooks or the notes that you are taking care of. ठीक है? Alright? What is the trick? थाली जैसा थाइलाकॉइड. थाइलाकॉइड कैसा होता है? थाली जैसा. थाली कैसी होती है? चपटी. You just have to remember this. थाली जैसा थाइलाकॉइड, that's all. एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक थाली, and that makes your granum. और यहां पे होता है आपका क्लोरोप्लास्ट, राइट? इस ये क्लोरोप्लास्ट में अब यहां पे मिलेगा आपको आपका पिगमेंट. व्हाट इज द पिगमेंट प्रेजेंट इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट व्हिच कैन हार्वेस्ट द सनलाइट? क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन. आंसर मी दैट इन द चैट बॉक्स. कम ऑन. यस बोथ, यू आर एब्सोल्युटली राइट. फैंटास्टिक. सोमेश, वेरी गुड. रोहित, रोहित ने सबसे पहले जवाब दिया है एंड द जवाब इज क्लोरोफिल इज द पिगमेंट. पिगमेंट का नाम क्या है? क्लोरोफिल. तो ये रहा आपका क्लोरोफिल का पिगमेंट. इसका स्ट्रक्चर आपको ग्रेड 10 में याद रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, लेकिन आपको याद क्या रखना है? व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर? For you to remember, it is important that this chlorophyll pigment is a complex molecule. You can find magnesium, nitrogen, carbons, oxygen, right? All of this compounds over here. ठीक है? ये एक कॉम्प्लेक्स पिगमेंट होता है एंड यू कैन फाइंड मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन. ये सारे एलिमेंट्स यू कैन सी हियर. करेक्ट, राइट? नाउ देयर आर, क्या एक ही टाइप का क्लोरोफिल होता है? क्या आपको एक ही टाइप का भोजन अच्छा लगता है? सिर्फ दाल रोटी रोज, सुबह शाम दोपहर, ब्रेकफास्ट लंच डिनर? नहीं ना. ठीक है, सबका अपना अपना चॉइस होता है. ऐसा ही कुछ प्लांट्स के साथ भी होता है. इनके पास भी अलग अलग टाइप के क्लोरोफिल्स होते हैं जो कि अलग अलग वेवलेंथ को हार्वेस्ट कर सकते हैं. ना फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, देखो यार साइंस से सब कुछ जंबल होने वाला है. ठीक है, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा कि आप के पास कितनी वेवलेंथ्स होती है. लाइट की अलग अलग वेवलेंथ्स होती है एंड ईच क्लोरोफिल हैज द कैपेसिटी. जी अमन, ग्रीन पिगमेंट, करेक्ट, राइट? सो यहाँ पे आपने पढ़ा होगा कि फिजिक्स में कि वेवलेंथ अलग अलग होती है, राइट? एंड यहाँ पे जब वेवलेंथ अलग अलग होती है तो अलग अलग क्लोरोप्लास्ट के पास अलग अलग वेवलेंथ को कैप्चर करने की क्षमता होती है, राइट? द Chlorophylls are of 9 different types are known to us by now. Correct both, right? So that is why we have different kind of chlorophyll. इनमें सबसे कॉमन होते हैं दो टाइप, chlorophyll A and chlorophyll B. Chlorophyll A and chlorophyll B. Come on, write it down. This is not there in your textbooks and questions do come from here, right? Questions do come from here. No, not the leucoplasts. Those are the plastids. They are not involved in photosynthesis. Right? Hi Shrivardhara. Good evening. तो चलो, सबसे important from the autotropic nutrition is your equation. Very simple equation. And what is the question that come from this equation, which is very tricky, right? Very tricky. What is the question? The question is कि मैं अगर आपको रात में उठा दूं एंड आई आस्क यू कि व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द ग्लूकोज, यू कैन टेल मी C6H12O6. यस और नो? सबको पता है C6H12O6. C6H12O6. नॉट अ बिग रॉकेट साइंस ओवर हियर. ठीक है, वेरी क्लियर. नाउ हाय रुद्रा, गुड इवनिंग. अभी नाउ यू टेल मी कि यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन आया है, दिस ऑक्सीजन इज कमिंग फ्रॉम वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड. जिसने इसका आंसर दे दिया वो मेरा आज का सुपरस्टार, वो भी अभी के अभी, राइट नाउ. You are saying water, water,
water, simple, water. Sivender, right, water. Okay, wait for it now. Wait for it, we'll come back to this question. Okay, so now carbon dioxide plus water in the presence of light, chlorophyll, glucose is made, oxygen is released. Coming to the first question, जब हमने सेशन स्टार्ट किया था, I've asked you one question, क्या प्लांट डे ऑक्सीजन और नाइट में कार्बन डाइऑक्साइड देता है? Yes, Aman, I know that. अरे कॉमर्स का स्टूडेंट है तो क्या हुआ, खाना तो खाता होगा, राइट? है ना, ठीक है. तो ऑक्सीजन, यू गाइज वर करेक्ट, इट गिव्स आउट इन द डे टाइम ओनली, बट कार्बन डाइऑक्साइड तो दिन में भी छोड़ेगा और रात में भी इट विल रिलीज, बिकॉज इट इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन. It is a byproduct of respiration. Now I am seeing some answer changes over there. ठीक है? Now I am seeing some answer changes over there. Right? So यहाँ पे जो पहला वाला क्वेश्चन था आपका, मैंने कहा था PYQ है, right? उसका आंसर है no. The carbon dioxide is also released during the daytime as well as in the night time, but the effect of carbon dioxide gets nullified as it is utilized for the process of photosynthesis during the daytime. Yes? Correct? Okay. Now coming to the question, तो मेरा सुपरस्टार आज का कौन था? आज का सुपरस्टार मेरा कौन था, देखने दो. सबसे पहले आंसर मुझे शायद सही आंसर आज का मेरा सुपरस्टार है दर्शन. आपने अपना नाम क्या बताया था, एक बार फिर से लिखिएगा. राइट दर्शन, जो नाम डिस्प्ले हो रहा है आप अपना नाम लिखिएगा. यू वर द सुपरस्टार, यू टोल्ड मी कि इट कम्स फ्रॉम दी कार्बन डाइऑक्साइड. अब इसका आंसर छुपा है इसके लाइट एंड डार्क रिएक्शन में. फोटोसिंथेसिस वी से कि इट ऑकर्स ओनली इन डे टाइम. गलत. फोटोसिंथेसिस में लाइट हार्वेस्ट हैपेंस इन द डे टाइम एंड इन द डार्क रिएक्शन विच कैन ऑकर. अच्छा एक बात बताओ, light reaction happens in daytime, do dark reaction happen in night time only? Mahendra was my superstar for today. No, right? Fantastic, Rudra, Amin, both, Somesh, fantastic. This happens both in day plus नाइट. राइट, डे नाइट 24 घंटे ये होती रहती है, बिकॉज द लाइट रिएक्शन का साइट वेरी इंपॉर्टेंट कि यह होता है लाइट रिएक्शन हैपेंस इन द स्ट्रोमा. राइट, कहां पे होता है? स्ट्रोमा में होता है? नहीं, स्ट्रोमा में होगा डार्क रिएक्शन, बिकॉज हमारे ग्रैनम्स में chlorophyll pigment is present. The chlorophyll pigment is present in your granum, so it will happen only in the granum, the light reaction. But whereas the dark reaction, which is also called as light independent reaction, will happen in the stroma. Now सबसे पहले होता क्या है? Why is light utilized? Correct question, Deep. Right? So why is it utilized in the light? Light is utilized. सबसे पहले क्या होता है? The light reaction happens in the thylakoid. This is the first step of photosynthesis. The light is harvested by the chlorophyll. Chlorophyll water को split करेगा. वाटर मॉलिक्यूल वुड बी स्प्लिटेड, H2O वाटर को स्प्लिट करने के बाद हमें दो चीज मिलेंगी, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. ठीक है, ऑक्सीजन निकल के ऑक्सीजन हो जाएगा विच वुड बी रिलीज्ड आउट. इट इज नॉट यूटिलाइज्ड.
Now the hydrogen is free, which would be used in C6H12. H12 जो आता है, that comes from the water. That actually is energy is utilized for splitting of water. And then in the light independent reaction, in the dark reaction, the carbon dioxide is assimilated into glucose. मतलब कि complete CO2, कार्बन डाइऑक्साइड वैसे के वैसे हम ग्लूकोज में इस्तेमाल करते हैं. तो ऑक्सीजन अब बताओ कहां से आया? Yes, both coming to that only. From where did the oxygen in the glucose came? नहीं, from the carbon dioxide, from the carbon dioxide boat, from the carbon dioxide. Why? CO2 से assimilate होके आता है डायरेक्ट. हम जाएंगे अभी इक्वेशन पे, हमको जाना पड़ेगा इक्वेशन पे. यहां पे देखो, लाइट गिरा, यहां पे हो गया हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन सेपरेट, स्प्लिटिंग हो गया, टूट गया. राइट, इट हैज बीन ब्रोकन डाउन. नाउ द कार्बन डाइऑक्साइड इज कंप्लीटली assimilated during the light independent reaction in the stroma in the glucose form. Right, carbon dioxide is converted, assimilation, reduced. What word do we use? We use the word reduce. Right, we use the word reduce because carbon dioxide is reduced during the light independent reaction. Light independent reaction is called as the Kelvin cycle. क्योंकि ये अंकल जो Kelvin अंकल है, right, हमारे Melvin Kelvin, he has actually discovered this Rubisco cycle is there. We are not studying it in grade 10. आगे जब पढ़ोगे तो आप पढ़ोगे. तो वहाँ पे during this Kelvin cycle there's a complete reaction where you understand कि carbon dioxide is reduced into glucose. All right? ठीक है, समझ में आ गई बात सबको? I am low in energy. देविका मैम लो हो गई एनर्जी में. क्या करना चाहिए अभी? मैम को खाना चाहिए. मैम क्या खाती है? यू नो दैट बेटर. ठीक है, यू नो दैट बेटर. यस बोट, करेक्ट करेक्ट. आई वॉन्ट द लाइक्स. ठीक है, सो अब यहाँ पे प्लांट्स यूजुअली हमारे ग्लूकोज को कैसे स्टोर करके रखेगी? नहीं, फ्रूट्स नहीं खाती. आई ईट योर लाइक्स. ठीक है, it is stored in the starch. What is starch? Starch is the polymer of glucose. मतलब क्या? ग्लूकोज एक, अनेक ग्लूकोज स्टार्च. सिंपल, कीप इट वेरी सिंपल. एक ग्लूकोज अनेक ग्लूकोज साथ स्टार्च बन गया. So that is what is for my English students. I am repeating it. When many glucose come together and form a long polymeric chain of glucose, that is actually starch. Right? Carbohydrate. Fantastic. Starch is a polysaccharide. बहुत सही रोहित. ठीक है, सो चलो अब बात करते हैं कि न्यूट्रिशन किस टाइप के होते हैं. PYQ, write it down, note it down. PYQ, previous year question. What is the previous year question from this? What are the three main types of nutrition, of heterotrophic nutrition? Heterotrophic nutrition. ठीक है, what are? तो ये क्वेश्चन है PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भैया. What are the three? What are saccharides? Saccharides are long chains of monosaccharides. ठीक है, saccharides are carbohydrates basically. Saccharides carbohydrates को कहा जाता है. ठीक, we have types of autotropics also. हाँ, yes, chemoautotrophs, photoautotrophs, but that you don't have to deal with it right now. ठीक है, what are the three types? Answer.
What are the three types? Three major types of the heterotrophic nutritions are holozoic nutrition, जो हमें दिखते हैं, humans, animals, saprophytic, fungi, आपकी yeast, right? Your mushrooms, they show this, they grow on dead and decaying organism. And parasitic, you see this in the insects and in some plants. यहाँ पे very important example is of your cuscuta plant, right? Some cuscuta plant जिसे हम हिंदी में अमर बेल के नाम से जानते थे. Yellow wine is the common name. Fantastic, right? Other than that, there is also symbiotic nutrition in case of hi Joyshri, in case of your lichens. All right, so chalo, let's do it फटाफट आगे कि what are the 5 steps of a holozoic nutrition? Ingestion, digestion, absorption, assimilation and egestion. Ingestion, intake of food. Digestion, breaking down of the complex food material into simpler form is digestion. Absorption, when this digested food is taken in the blood. Assimilation is utilization of the absorbed food material, and egestion is removal of waste material. Hello ji. Welcome to the class. मैं एकदम fantastic. Right? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पढ़ाई करने में मजा आना चाहिए. ठीक है? जब भी हम रिवाइज करते हैं, पैसिव रिवीजन नहीं होनी चाहिए, रिकॉल होना चाहिए, एक्टिव रिवीजन होनी चाहिए. यू शुड गेट इन्वॉल्व. राइट? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देविका मैम के साथ अगर मजा आ रहा है तो एक लाइक बटन हिट करो. मेरी क्यूटी कैटी आ गई? यस, मेरी क्यूटी कैटी आ गई. तो क्वेश्चन का टाइम आ गया. मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा इज, मोड ऑफ nutrition in amoeba is, my name is Deveeka and amoeba, answer do. Fantastic. ठीक है बोट, we will clear it, no worries. D holozoic, बहुत सही. तो in case of amoeba also, it also take up entire food. What does an amoeba eat? एक अमीबा क्या खाता है? अमीबा का फूड क्या होता है? छोटे प्लैंक्टन्स, zooplankton और the bacterias. ठीक है? It also shows all of these things. It sees senses a bacteria, grows the pseudopodia, pseudo-false, podia, pair, right? Pseudopodia makes the food vacuole there, digestion happens, absorption, assimilation, egestion. हुई कि नहीं पूरी की पूरे 5 step of holozoic nutrition, right? Fantastic. So अगर question आता है कि in the unicellular organism, where do you see holozoic nutrition? You see that in amoeba. Amoeba is a protozoan. Right? अभी देखते, ये देखो, बेहतरीन स्लाइड बनाइए यार. राइट? क्या हो रहा है? ये फूड खा रहा है अमीबा आपका. The amoeba is eating your food. Correct, Rohit. Very nice. Phagocytic ही होता है, ठीक है? Yes. Correct. Pinocytic and phagocytic. Fantastic. Right. So चलो. So अब हम बात करेंगे ह्यूमन बीइंग के न्यूट्रिशन की, आपके न्यूट्रिशन की. तो आज मुझे पता चला कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा दाल रोटी खाई है. ठीक? आपने आज बहुत ज़्यादा दाल रोटी खाई है. तो मेरा एक प्रॉब्लम है. I have this issue. Whenever I see food, right, you guys must be seeing it as dal roti. For me it is like, oh, carb and protein. ठीक है? So I'm a pure vegetarian. I'm a herbivorous animal, right? So now here, thank you Gupta ji, right? तो यहाँ पे कैसे digestion होता है? We have a alimentary canal. What is an alimentary canal? The tube that starts from the mouth and ends up into the anus. It's a continuous one tube, one single opening. That is your alimentary canal.
Then what is digestive system, bhaiya? Right? What is digestive system? What is digestive system? Alimentary canal plus the digestive gland together is called as digestive system. Guys, ये बेहतरीन नोट्स आपको मिल जाएगी आपके टेलीग्राम ग्रुप में, पता है ना? But I'll come to that, बेटा. Be rest assured, I'll come to that definitely. ठीक है? ये बेहतरीन नोट्स वन साइड नोट्स है. एग्जाम के तुरंत पहले आप खोलोगे तो अब पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लीन हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा. ऐसी नोट्स है. अच्छा, दूसरी बात, डायग्राम इंपॉर्टेंट है. इन दिस आई विल कीप टेलिंग यू कौन सी डायग्राम इंपॉर्टेंट है, कौन सी नहीं आती है. ठीक है? फंटास्टिक अमन, राइट? फंटास्टिक. So here it comes, we take food from our mouth, right? What do we have in our mouth? We have a buccal cavity. Buccal cavity हमारी जो होती है, human buccal cavity. When you are a child, आपको याद होगा, लोग खिड़की बुला के चिढ़ाते भी होंगे, right? When we lose our milk teeth, yes or no? टूटे कि नहीं तुम्हारे दांत, कि मेरे ही टूटे हैं? बताओ जरा. अगर टूटे हैं तो then you are a difour-dent animal. You are a difour-dent animal अगर आपके दांत टूटे हैं. मैं हूं, ठीक है? आपका पता नहीं, कोई भी नहीं टूटा है. क्या बात कर रहे हो भावेश, कुछ तो टूटे होंगे यार. Difour-dent animal कौन होते हैं? जिसके पास दो सेट. The animals who have two sets are called as difour-dent. When we are kids, when we are small, to a certain age, we have 20 teeth. And when we grow up, right, when we get a full permanent teeth, तो हम कहते हैं 32 ही तोड़ दूंगा. ठीक है? ज़्यादा हंस रहे हो? 32 ही तोड़ दूंगा, right? तो 32 दांत, 32 teeth in our mouth we have. So what is missing, guys? What is missing over here? Can you note down? क्या मिस हो रहा है? ये कलर कोऑर्डिनेशन यहाँ पे दिया गया है. मैं बढ़ती हूँ अगले टॉपिक की ओर. तब तक आप मुझे इस चीज का क्वेश्चन दो कि या आंसर दो इस क्वेश्चन का कि क्या मिसिंग है यहाँ पे. एज अ जुवेनाइल, एज अ स्मॉल किड, which teeth are not there, right? उसके बाद we have our teeth fitted into sockets, right? इसीलिए we are called as thecodont. हमें क्या बुलाया जाता है? Thecodont. Fantastic, Rohit. Fantastic, right? We do not have the molar, the third molar. और एक चीज मिसिंग है guys, premolars. We do not have premolars over here. नहीं है, यहाँ पे है. If you can check them. That's how this become 32. और यहाँ पे वो मिसिंग है. Such questions can come. Such questions can come, right? ठीक है? So fantastic. अब आगे बढ़ते हैं. सबसे पहले digestion starts at. This is also PYQ. Digestion begins at. It begins in your mouth. In your mouth, you have this teeth and the tongue which help in mastication, that is making the bolus soft. Eating, chewing. So mechanical digestion as well as enzymatic digestion by salivary amylase. What is salivary amylase? What is salivary amylase also called as? Thecodont is nothing but when we have socketed jaw. तो एक गम में हमारे छेद होते हैं और छेद में दांत गड़े हुए होते हैं. The teeth are fitted into sockets. It is not same for all the animals. In snakes, they have different arrangement. Their teeth are attached to the gums. Right? Very good, Joyshri. It is also called as pateline. इसे क्या बुलाया जाता है? AKA salivary amylase, AKA pateline. Pateline does what? Pateline does what? It works on carbohydrate, works on degradation of starch. It works on degradation of starch. Fantastic. So, अब ये हो गया, bolus बन गया, निवाला बन गया. The bolus has been made, it would be sent down. It will go into your esophagus. Esophagus is your food pipe which will do the parasystolic movement. Parasystolic movement, so the food is pushed down and it will reach your stomach. Now, stomach is a J-shaped pouch. पूछा जाता है एग्जाम में. J-shaped organ in your digestive system is the pouch.
Yes. Correct? It is also churning. So mechanical digestion is also happening. यहाँ पे very important thing, chemical breakdown happens by HCl. There are gastric glands present in the stomach which produces HCl. फटाफट बताओ chat box में what is the job of HCl? HCl पेट में किस काम आता है? Mention it in the chat box. Let me see who is going to be my superstar now. Question आ गया है जयश्री. Function of HCl. अरे नहीं भावेश, HCl जानते हो आप, बाथरूम भी क्लीन करते हो HCl से, इतना एसिडिक होता है, because of which the pH in our stomach becomes 2, nearly 2, which is very very acidic. Let me tell you. Joyshi, the question I am repeating. The function of HCl in stomach is. Pranisha, G, no, still I am not getting the answer. Aman, yes, half correct answer. I want more. ठीक है? So, muscular walls of the stomach, it churns the bolus, mix करता है, and then you get the chyme. Digestion. I want 10th grade का answer, guys. I want 10th grade का answer for the examination. वेल्ले वाले answer मत दो मुझे. Perfect from the bacteria and make the food acidic so that the bile work on it. Bile नहीं. Bile और इसका कोई connection नहीं है. ठीक है? Break down the complex food. Yes, hydrolytic acid. It. Yes, Joyshri. Fantastic. Guys, call up your friends. Share. If you're loving it over here with me, share the link with your friends and call them so that the study become more important. Leukophile. I know, right? Correct? Okay, so चलो आगे हम लोग कहाँ पे थे? स्टमक में. फूड कहाँ पे था आपका? आपकी दाल रोटी कहाँ पे थी? यहाँ पे, है ना? The stomach produces certain acid and also enzyme pepsinase. ये क्या बनाता है? Pepsinase. HCl convert pepsinase into pepsin. इसे पेप्सिन में कन्वर्ट करता है. अब मैंने आंसर बता दिया है, ये बताया कृपया पेप्सिन का काम क्या है. राइट? करेक्ट. ओके. Now the dal roti is reaching your small intestine. The first part of your small intestine is the duodenum, then the jejunum and the ileum. Important, guys, important for you to understand this. Small intestine is the site where the process of digestion ends. Hereafter, no digestion. जो होना था यहाँ पे हो जाएगा, खत्म बात. ठीक है? I'm not seeing likes over there and I'm not really liking it because my energy goes down. Come on, give me some energy. Now, duodenum में आ गया आपका दाल रोटी यहाँ पे आ गई है. दाल मतलब कि प्रोटीन, right? उसमें लगा है घी का तड़का, तो fat. So what all do we have? We have protein to digest, we have fat to digest, we also have carbs to digest जो रोटी से आए हैं, right? So you have eaten protein, fat as well as carbs over there. अगर आपने कोई सलाद खाया है तो उसका रफेज भी रहेगा, right? So now here in small intestine, it is the third site of digestion, also the last site of digestion. It has small microvilli, right? Now the first site, the duodenum. मैं आपको एक बेहतरीन इमेज बताती हूँ, इसको देखो आप जरा. ठीक है? This is your duodenum. ठीक है? ये आपका duodenum है. यहाँ से स्टमक रहेगा. अब यहाँ पे you can see the accessory gland, the liver. Liver, fun fact. The largest gland in your body is liver. चलो fun fact भी हो गया आज का. ठीक है? आज की trick of the day भी हो गया. थाली जैसा thylakoid, याद है ना? Largest gland of your body, fun fact भी हो गया. Right? Pepsinogen and pepsinase दोनों ही अलग अलग एंजाइम्स हैं जो कि प्रोटीन्स पे ही काम करते हैं रोहित. ठीक है? No, Joyshri, you have to stay.
ठीक है, तो अब यहाँ पे फूड आ गया है. इट will receive the juices from the gallbladder. Gallbladder से कौन आता है? Who is going to answer me? Who is going to answer me? Gallbladder से कौन आता है? What juice comes from the gallbladder? Meanwhile, I'll tell you what is gallbladder. Gallbladder is an assistant to your liver. It is an assistant to your liver. ठीक है? We'll come to that boat. मैंने छोड़ा नहीं है उसको. Bile juice, fantastic boat, fantastic रोहित, fantastic महेंद्र, अमन, सब लोग, सब बच्चा मेरा, भावेश, बहुत अच्छे. ठीक है, तो ये क्या बनाता है? बाइल बनाता है. नाउ गाइज, बाइल कैसा है? बाइल इज अल्कलाइन. बाइल इज अल्कलाइन. अल्कलाइन बाइल. एंड स्टमक से आने वाला फूड कैसा है? हाईली एसिडिक. Highly acidic. So now bile will mix up with the, yes, it's basic, correct hero, right? So it is basic. It will actually now neutralize the pH of the acidic kind that's coming from the stomach, the half digested food, and now it will also receive the pancreatic juices. Duodenum is the site. Note it down, भूल जाओगे आप लोग कि duodenum is the site where it receives the pancreatic and the liver juices. The digestive enzymes from the liver and pancreas are secreted into the duodenum. Important to remember. Very important to remember. ठीक है, चलो. ये भावेश मेरा कॉमर्स का बच्चा है जो बायोलॉजी पढ़ रहा है आज पहली बार, है ना? करेक्ट. तो अब बाइल क्या होता है? येलोइश ग्रीन वाटरी फ्लूइड. यार एक मजेदार बात याद आ गई, मैं शेयर करना चाहूंगी. आपने भी देखा होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं, इन्फेंट्स आर लाइक द स्मॉल किड्स, है ना? बहुत ही छोटे जो दूध पीते बच्चे होते हैं 6 महीने तक के. टू देम वी रेफर देम एज द इन्फेंट, राइट? है कि नहीं? Now here this infants they drink milk but their excreta is still yellow in color. Right or wrong? Correct me if I'm wrong. है कि नहीं? Did you observe or not? यार you will deny but मैं जानती हूँ सबने ऑब्जर्व किया है कि उनका भी एक्सक्रीटा पॉटी सुसु जो है वो येलो कलर की रहती है. That pigment is coming from bile and not from the haldi that you eat. ठीक है, सो आज मैंने एक मिथ को भी क्लियर किया आपके लिए. तो आज हमने एक मिथ को भी क्लियर किया, राइट? फीकल मैटर, जी हाँ, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस बाइल. बाइल में होता है 2 पिगमेंट, बिलिरुबिन एंड बिलिरुबिन, राइट, जो कि येलोइश टेंज देते हैं. बट दैट्स नॉट द जॉब, ओके? इसमें क्लोरोस्ट्रॉल भी होता है, वाटर भी होता है. बिलिरुबिन एंड बिलिरुबिन, दिस आर द पिगमेंट विच गिव्स येलो कलर टिंज. द जॉब ऑफ दिस इज to degrade the big fat molecules into small fat molecules. Remember guys, there is no chemical change happening, there is no degradation happening, it is just going to emulsify the fat further. Right? After emulsification, the job is for the lipase enzyme to happen. Right? It is for the lipase to happen. Hi Lakshmi. Now, function क्या है? It creates alkaline medium. We discussed bile is a salt. It emulsifies the fat. That is emulsification, right? So we have done this. Now both coming to your point, and for everybody this is the most important point over here करने को, ठीक है? ठीक है? I want 100% attention. I want 100% attention. What is the important point? Chalo, boiled juice contains what? Enzymes. Amylopsine, trypsin, sepsins. ये क्या होते हैं? Now guys, these are the enzymes which work on different kind of material.
अमाइलोप्सिन विल वर्क ऑन कार्बोहाइड्रेट. किस पे काम करता है? कार्ब्स पे. ट्रिप्सिन, नोट इट डाउन, नोट इट डाउन, नोट इट डाउन. ट्रिप्सिन वर्क्स ऑन प्रोटीन, प्रोटीन डिग्रेडेशन. सेप्सिन works on fat degradation. Sepsin works on fat degradation. Right? ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ठीक है. सेप्सिन के नाम का दवाई भी आता है. Just so that you remember, I tell you the story so that you can build up a memory palace which help you to boost your memory. बायोलॉजी में प्रॉब्लम ही वो होता है, रट्टा मारना पड़ता है, नहीं मारना पड़ता है जब आप मेरे साथ हो. ठीक है. सेप्सिन के नाम की एक दवाई भी आती है, टैबलेट, जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, जिसको कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम होता है, मतलब फैट एक्यूमुलेशन का प्रॉब्लम होता है. सो सेप्सिन इज फॉर फैट डिग्रेडेशन. कम ऑन, नेक्स्ट वन नाउ. Starch, which is remaining, pending starch, 30% starch degradation happens in the buccal cavity with the salivary amylase. Pancreatic amylase is called as amylopsin, converts it into simpler form maltose. Another types of proteins and polypeptide, trypsin, मैंने पहले ही बता दिया, converts it into amino acid. Trypsinogen, trypsinogen is an enzyme. ठीक है. It is an enzyme. It is in inactive form. सारे के सारे enzyme will not be in active form, otherwise they would go waste. So whenever required, enterokinase is being produced by your pancreas. That will convert this inactive enzyme into an active form and trypsin आगे जाके प्रोटीन को डिग्रेड कर देगा. यस सोमेश, राइट. कोलेस्ट्रॉल का जिससे प्रॉब्लम होता है, ट्राइग्लिसराइड का प्रॉब्लम होता है वो. लाइपेज इज अ फैट डिग्रेडिंग, लिपिड को डिग्रेड करने वाला एंजाइम होता है लाइपेज. श्रीनिवास, राइट, करेक्ट. अभी यहाँ पे इमल्सिफाइड फैट, बाइल ने फैट को इमल्सिफाई कर दिया. दैट स्मॉल फैट मॉलिक्यूल्स इज वर्कड अपॉन बाय द सेप्सिन एंड देन इट इज डिग्रेडेड टू ग्लिसरॉल फैटी एसिड. वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस में आएगा VSA, वेरी शॉर्ट आंसर्स वाला जो सेगमेंट है, 2 मार्कर और 3 मार्कर. 2 और 3 मार्कर में ये आएगा. ठीक है. क्या आ सकता है कि कौन किस में कन्वर्ट हो जाता है? विच कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इज कन्वर्टेड इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल. ऑलराइट, आई होप यू आर नोटिंग इट डाउन. अरे भावेश, दैट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन दी जीन्स. उसको हम हेरिडिटरी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, आना जरूर आप. ठीक है. सो नाउ इंटेस्टाइनल जूसेस, पेप्टाइडेज, एपिरिप्सिन in amino acid is converting. Amaltase work on maltose and convert it into simplest form glucose. ठीक है. अब lactose is worked upon by lactase, again glucose and galactase is formed. Right? Now, lipase, you guys were asking what is the job of lipase? Work upon the fats, lipids, and that is converting it into the fatty acid and glycerol. Alright? ठीक है. अब यहाँ पे small intestine में क्या होता है? Microvilli and villi. So microvilli and villi are like increasing the surface area. ठीक है. अगर ये साथ में रहा तो surface area is only this much, but when the villi are there, it is going to increase the surface area, right? And that will actually help in excess of absorption and everything will happen over there. Large intestine is the site only where you will have water absorption and nothing else. Water absorption and nothing else. So large intestine, villi and microvilli are not present much of the time over there, and it is the site for the water absorption. And there we are going to the quiz section now. Quiz section. Ready for the quizzes? Both coming to your answer. HCl का क्या काम है? HCl works on the killing of pathogen that enters in your body, and I have explained you कि HCl also works on activating the pepsin to pepsinogen to pepsin, right?
Ready? Steady. Go. Question is on your screen. Question is on your screen. In which of the following group of organism food material is broken outside the body and absorbed? Mushroom, green plants, amoeba, yeast mushroom, bread mold, paramecium amoeba, cuscuta, lice and tapeworm. Do not forget, in the end, we have a surprise for you. Okay? क्या बात है यार, क्या बात है. Fantastic. It is the saprophytic mode where the food is digested outside and then absorbed. So it is BBB. Fantastic. Next question on your screen. Where are the enzyme pepsin produce? क्या है इसका सही आंसर? A and B. A and B you are saying? Leukophil? Yeah. A. Fantastic both. Fantastic. A, right hero. Fantastic. Fantastic. Stomach में होता है पेप्सिन. अभी पढ़ा हमने. मैंने बोर्ड का आंसर भी दिया था. चलो. Which of the following statements is or are correct? Pyruvate can be converted into ethanol and carbon dioxide by the yeast. Fermentation takes place in aerobic bacteria. Fermentation takes place in mitochondria. Fermentation is the form of anaerobic respiration. You are saying A, 1 and 3? No. Answer and likes. My energy is low. हाँ ये रेस्पिरेशन का है क्योंकि अगली बार हम कुछ पढ़ेंगे ऐसा ही. ठीक है, मैं जस्ट चेक कर रही हूँ कि whether do you know this or not. Take a screenshot and send me the correct answer into the Telegram group. ठीक है, इसका सही आंसर है fermentation is the form of anaerobic respiration and pyruvate can be converted into ethanol. Right? Fantastic. Next class हम पढ़ेंगे दिल का दिमाग से झगड़ा लगाया कैसा. So we are going to talk about the beautiful heart of us, my favorite organ though, right? And this is the timetable. कल आप मिलेंगे 4th Jan रहेगा मैथ्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन जैसे कि मैंने आपको अभी अभी बताया. तो कल सेम टाइम वी विल मीट, राइट? उसके पहले मिसबा सर आएंगे एंड दिस इज योर सरप्राइज गाइज. दैट्स द होमवर्क फॉर यू which is related to the next topic. I want you to send me the answers into the Telegram group. Telegram group ka link is in the chat box and I am going to display the first 5 names who are going to send me the answer in the Telegram group. Those would be my superstars. तो कल का सेशन उन 5 बच्चों के नामों के साथ शुरू होगा. Thank you guys, you were superb, fantabulous. Do not forget to share and ask your friends to join. We will study together. Ta-ta, take care, bye-bye. A happy new year one more time.